Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now I am going to narrate a very interesting story, The Wind on Haunted Hill. The Wind on Haunted Hill is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond was born on 1934. He is an Indian English writer. Most of his stories are set in the hill stations in the foothills of the Himalayas, where he spent his childhood. He received the Sahitya Academy Award for his short stories in 1992 and the Padma Shri in 1999. Whoo, 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 cried the wind as it swept down from the Himalayan snows. It hurried over the hills and passed and hummed and moaned through the tall pines and deodars. There was little on Haunted Hill to stop the wind, only a few stunted trees and bushes and the ruins of a small settlement. जब हिमालयन स्नो से हवा पास हो रही थी तो बहुत तेज़ी से जो है वो एक हिल से दूसरी हिल में गुनगुनाते हुए टॉल पाइन्स और देवदार के ऊपर से होकर निकल रही थी। उस हॉन्टेड हिल में कोई भी उस हवा को रोकने के लिए नहीं था, बजाय कुछ स्टंटेड ट्रीज और बुशेस और कुछ जो वहाँ की जो पुरानी चीज़ें रही होंगी उनके ruins. On the slopes of the next hill was a village. People kept large stones on their tin roofs to prevent them from being blown off. There was nearly always a strong wind in these parts. 3 children were spreading clothes out to dry on a low stone wall. Spreading means phailana. Putting a stone on each piece, 11 years old Usha, dark-haired and rosy-cheeked, struggled with her grandfather's long, loose shirt. Her younger brother, Suresh, was doing his best to hold down a bedsheet while Usha's friend Binya, a slightly older girl, helped. जैसे बहुत तेज हवा चल रही थी तो उसमें क्या था, जो वहाँ के जो आसपास के जो गांव था वहाँ पर लोग अपनी जो टिन की छतें होती थी उन पर पत्थर रखते थे ताकि वो वहाँ से उड़ ना जाए. जो 11 इयर्स ओल्ड उषा थी वो बड़ी मुश्किल से अपने ग्रैंडफादर का जो लूज शर्ट था उसको वहाँ पर हवा में डाल पा रही थी, क्योंकि हवा की तेज़ी की वजह से वो भी उड़ रहा था. जो उसका यंगर ब्रदर था सुरेश और जो उसकी फ्रेंड थी बिनिया, उसने थोड़ी सी उसकी मदद करी. Once everything was firmly held down by stones, they climbed up on the flat rocks and sat there, sunbathing and staring across the fields at the ruins on Haunted Hills. I must go to the bazaar today, said Usha. जब सब कुछ सेट हो जाता था उसके बाद एक पत्थर पर चढ़ करके वो लोग वहाँ पर बैठते थे, जहाँ पर जो है जो हॉन्टेड हिल था, जो ऑलमोस्ट जो कुछ भी वहाँ पर जो बर्बाद हो रहा था उस हवा की वजह से जो ख़राब हो रहा था उसको वो वहाँ से देखते थे. और वहाँ पे जो है बैठे बैठे उषा ने क्या सोचा कि वो उस दिन बाजार जाएगी. आई विश आई कुड टू, सेड बिनिया, बट आई हैव टू हेल्प विद द काउज. आई कैन कम, सेड 8 years old सुरेश. ही वॉज ऑलवेज रेडी टू विजिट द बाजार. बिनिया ने भी जाना चाहा, लेकिन उसको काऊ के साथ काम करना था. तो उसका जो 8 years ओल्ड जो सुरेश था ब्रदर, वो हमेशा उसके साथ जाने के लिए तैयार रहता था. विच वॉज 3 miles away on the other side of the hills. No, you can't, said Usha. You must help grandfather chop wood. Chop करना, cut into pieces. Chop का मतलब कट इनटू पीसेस में इसको डिवाइड करना, कि तुम ग्रैंडफादर के साथ लकड़ियों को काटने में हेल्प करना. वोंट यू फील स्केयर्ड रिटर्निंग अलोन, ही आस्क्ड. देयर आर घोस्ट ऑन हॉन्टेड हिल्स. क्या कहा उसने कि हॉन्टेड हिल में क्या है, घोस्ट हैं, तुम्हें डर नहीं लगेगा वापस आने में. आई विल बी बैक बिफोर डार्क,
ghosts don't appear during the day. Are there lots of ghosts in the ruins? Asked Binya. Grandfather says so. He says that over 100 years ago, some Britishers lived on the hill, but the settlement was always being struck by lightning, so they moved away. But if they left, why is the place visited by ghosts? अगर उन्होंने छोड़ दिया है ब्रिटिशर्स ने, तो उस जगह पे जो है घोस्ट क्यों विजिट करते हैं? Because grandfather says during a terrible storm, one of the house was hit by lightning and everyone in it was killed, even the children. घोस्ट क्यों आते हैं? क्योंकि जो टेरिबल स्टॉर्म आया था उसमें जो है एक फैमिली के लोग जो है सारे मारे गए थे, जो बच्चे थे उसमें बच्चे भी मारे गए थे. How many children? 2. A boy and his sister. Grandfather saw them playing there in the moonlight. Wasn't he frightened? No, old people don't mind ghosts. Usha set out for the bazaar at 2 in the afternoon. It was about an hour walk. The path went through yellow fields of flowering mustards, then along the saddle of the hill and up straight through the ruins. Usha had often gone that way to shop at the bazaar or to see her aunt who lived in the town nearby. जो पास में आंटी रहती थी, उषा कई बार जो है उस रास्ते से गई थी वहाँ बाजार में भी और उनको देखने के लिए भी. Wild flowers bloomed on the crumbling walls of the ruins, and a wild plum tree grew straight out of the floor of what had once been a hall. जहाँ पर कभी हॉल था वहाँ पर क्या है अब एक स्ट्रेट, क्या हो गया वहाँ पे एक स्ट्रेट प्लम ट्री वहाँ पर आ गया है. It was covered with soft white blossoms. Lizards scuttled over the stones, while a whistling thrush, its deep purple plumage glistening in the sunshine, sat on a window sill and sang its heart out. जो उस विंडो में है, उस विंडो में क्या है वहाँ पर लिजार्ड दिखाई देती है स्टोन के ऊपर वाइट फूल वहाँ पर खिले हुए हैं और अभी भी वहाँ पर क्या दिखाई देता है, वहाँ पर जो है डीप पर्पल जो फेदर्स हैं वो सनशाइन में चमकते हैं और वो कहाँ पर दिखाई देते हैं, विंडो सिल के ऊपर उसमें दिखाई देते हैं. उषा sang too as she skipped lightly along the path which dipped steeply down to the valley and led to the little town with its quaint bazaar. Moving leisurely, Usha bought spices, sugar and matches with the 2 rupees she had saved from her pocket money. She chose a necklace of amber-colored beads for herself and some marbles for Suresh. Then she had her mother's slippers repaired at a cobbler's shop. वहाँ जो है उषा ने अपने मार्केट के सारे काम जैसे अपनी पॉकेट मनी से उसने क्या किया, उसने कुछ स्पाइसेस, शुगर और मैचेस भी खरीदे. फिर उसने जो है जो अपना जो नेकलेस था वो भी उसने चूज़ करा और सुरेश के लिए उसने मार्बल्स चूज़ करे. फिर उसने जो है अपनी मम्मी की जो स्लीपर्स थी उनको रिपेयर कराया. फाइनली उषा वेंट टू विजिट आंट लक्ष्मी एट हर फ्लैट अबाउट द शॉप्स. They were talking and drinking cups of hot, sweet tea when Usha realized that dark clouds had gathered over the mountains. She quickly picked up her things, said goodbye to her aunt and set out for the village. अपनी आंट के साथ जो है जब वो टी ले रही थी तो उसने ये महसूस कर लिया था कि बादल आसमान में अब जो पर्वत के ऊपर बादल इकट्ठा हो गए हैं. जल्दी से उसने अपनी चीज़ों को लिया, आंटी को गुड बाय कह दिया. Strangely, the wind had dropped. The trees were still, the crickets silent, the crows flew round in circles, then settled in an oak tree. जो कौवे थे वो पहले सर्कल में घूमे और उसके बाद एक ओक ट्री के ऊपर जाकर के बैठ गए. I must get home before dark, thought Usha, hurrying along the path. But the sky had darkened and a deep rumble echoed over the hills.
Usha felt the first heavy drop of rain hit her cheek. Holding the shopping bag close to her body, she quickened her pace until she was almost running. अपनी चीज़ों को लेकर के जो उसने शॉप किया था, मार्केट में शॉपिंग करी थी, उसको लेकर जल्दी से जो है वो भागने लगी. The raindrops were coming down faster now. Cold stinging pellets of rain. A flash of lightning sharply outlined the ruins on the hill, and then all was dark again. Night had fallen. क्या हुआ था? रात हो गई थी. बारिश भी हो रही थी और रात भी हो गई थी. I shall have to shelter in the ruins. Usha thought and began to run. Suddenly the wind sprang up again, but she didn't have to fight it. It was behind her now, helping her along up the steep path and onto the brow of the hill. There was another flash of lightning followed by a peal of thunder. The ruins loomed before her, grim and forbidding. जैसे ही वो आगे बढ़ने लगी, क्या हुआ? मौसम और ख़राब होता चला गया. जो बिजली थी वो और तेज़ी से चमकने लग गई थी और बहुत सारे जो है तूफ़ान में जो है गड़गड़ाहट की आवाज़ें भी आ रही थी और अब जो है उषा को थोड़ा सा डर भी लगने लग गया था. उषा रिमेंबर्ड पार्ट ऑफ एन ओल्ड रूफ दैट वुड गिव सम शेल्टर. इट वुड बी बेटर देन ट्राइंग टू गो होम in the dark with the howling wind. She might stray off the path and fall over the edge of the cliff. Woo, 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 howled the wind. Usha saw wild plum tree swaying, its foliage thrashing against the ground. She found her way into the ruins, helped by the constant flicker of lightning. जो लगातार लाइट चमक रही थी उससे जो है उसको अपना रास्ता मिल गया था. Usha placed her hands against a stone wall and moved sideways, hoping to reach the shelter corner. Suddenly, her hand touched something soft and furry, and she gave a startled cry. अचानक उसके हाथ में क्या है, कुछ उसके हाथ में कुछ सॉफ्ट सा टच हुआ. उसने बड़े सरप्राइजिंग चिल्लाहट की आवाज़ उसके मुंह से आई. Her cry was answered by another half snarl, half screech, as something leaped away in the darkness. उसकी जो आवाज़ जो चिल्लाहट की आवाज़ थी वो जो है उसका भी उसको वहाँ पर जवाब मिल गया था. वो मतलब उसको सेम वही आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी. With a sigh of relief, Usha realized that it was the cat that lived in the ruins. For a moment, she had been frightened. Frightened, डर जाना. Frightened means डर जाना. But now she moved quickly along the wall until she heard the rain drumming on the tin roof. Crouched in a corner, she found some shelter, but the tin sheet groaned and clattered as if it would sail away any moment. जो आवाज़ आ रही थी उस तूफान में ऐसा लग रहा था कि किसी भी मोमेंट जो है वो वहाँ से आगे बह जाएगा. Usha remembered that across this empty room stood an old fireplace. Perhaps it would be drier there under the blocked chimney, but she would not attempt to find it just now. She might lose her way altogether. उसने क्या करा? उसको याद आया था कि कोई एक और प्लेस वहाँ पर है, एम्प्टी रूम वहाँ पर है, लेकिन उसने उसको ढूंढने की कोशिश उसमें नहीं करी क्योंकि उसको डर था कि कहीं वो गुम ना हो जाए, अपना रास्ता खो ना दे. Her clothes were soaked and water streamed down from her hair, forming a puddle at the feet. She thought she heard a faint cry, the cat again or an owl. Then the storm blotted out all other sounds. उसको क्या लगा? कुछ बिल्ली की या कुछ ऐसे आउल की आवाज़ उसको सुनाई दी. There had been no time to think of ghost, but now that she was settled in one place, Usha remembered grandfather's story about the lightning. Blasted ruins. She hoped and prayed that lightning would not strike her. उसने
प्रार्थना करी भगवान से कि जो ये बिजली की गड़गड़ाहट है और ये जो इस समय तूफान जो खराब हो रहा है वो उसको हिट ना करे. Thunder boomed over the hills and the lightning came quicker now. Then there was a bigger flash, and for a moment the entire ruin was lit up. A streak of blue sizzle along the floor of the building. Usha was staring straight ahead, and as the opposite wall lit up, she saw crouching in front of the unused fireplace two small figures, children. जब साइड वॉल में भी जब लाइट चमकी तो उषा ने क्या देखा फायर प्लेस में? दो छोटे बच्चों के फिगर. द घोस्टली फिगर्स seemed to look up and stare back at Usha, and then everything was dark again. Usha's heart was in her mouth. She had seen, without doubt, two ghosts on the other side of the room. She wasn't going to remain in the ruins 1 minute longer. अब वो 1 मिनट भी ज़्यादा वहाँ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि अब जो है वो डर गई थी और उसको पूरा विश्वास था कि ये जो दो बच्चों के जो फिगर दिखाई दिए हैं, they were the ghost. She ran towards the big gap in the wall through which she had entered. She was halfway across the open space when someone fell against her. अभी आधे रास्ते में पहुंची थी तब तक कुछ उसके आगे गिर गया. Usha stumbled, got up and again bumped into something. Bumped means bumped का मतलब टकरा जाना. नीचे गिरी, उठी, फिर दोबारा से किसी चीज से टकरा गई. She gave a frightened scream. Someone else screamed, and then there was a shout, a boy's shout, and Usha instantly recognized the voice. सुरेश. किसकी आवाज़ थी? वो सुरेश की आवाज़ थी. दोनों ने आपस में एक दूसरे को पहचान लिया था, सुरेश ने भी और उषा ने भी और बिनिया ने भी. They fell into each other's arms, so surprised and relieved that all they could do was laugh and giggle and repeat each other's names. Then Usha said, I thought you were ghost. फिर जो है जब तीनों एक साथ मिल गए तो तीनों ने एक दूसरे का मजाक बनाया, हंसी मजाक किया और उषा ने क्या कहा? उसको क्या लगा कि वो घोस्ट थी. We thought you were a ghost, said Suresh. Come back under the roof, said Usha. They huddled together in the corner, chattering with excitement and relief. When it grew dark, we came looking for you, said Binia. And then the storm broke. Shall we run back together? Asked Usha. I don't want to stay here any longer. We shall have to wait, said Binia. The path has fallen away at one place. It won't be safe in the dark, in all this rain. We shall have to wait till morning, said Suresh, and I am so hungry. The storm continued, but they were not afraid now. They gave each other warmth and confidence. Even the ruins didn't seem so forbidding. After an hour, the rain stopped, and the thunder grew more distant. Towards dawn, the whistling thrush began to sing. Its sweet, broken notes flooded the ruins with music. As the sky grew lighter, they saw that the plum tree stood upright again, though it had lost all its blossoms. जो plum tree था उसके सारे फूल गिर गए थे लेकिन वह अभी भी वहीं पर खड़ा था. Let's go, said Usha. तूफान अब रुक गया था, सुबह का टाइम हो गया था और सब कुछ अब ठीक हो गया था. Outside the ruins, walking along the brow of the hill, they watched the sky grow pink. When they were some distance away, Usha looked back and said, Can you see something behind the wall? It's like a hand waving. Wall के पीछे क्या दिखाई दे रहा था कि जैसे कोई हाथ वेव कर रहा हो. It's just the top of the plum tree, said Binia. वो जो हाथ वेव करता हुआ दिखाई दे रहा था वो क्या था? Plum tree. Goodbye, goodbye, they heard voices. Who said goodbye? Asked Usha. No, I said Suresh. Not, I said Binia. I heard someone calling, said Usha. It's only the wind, assured Binia.
उसने क्या बोला कि वो केवल हवा थी जो गुड बाय कह रही थी। उषा लुक्ड बैक एट द ruins. The sun had come up and was touching the top of the wall. Come on, said Suresh, I am hungry. They hurried along the path to the village. Goodbye, goodbye. Usha heard them calling. Was it just the wind? अब उषा को क्या सुनाई दे रहा था? गुड बाय गुड बाय। तो उसको लग रहा था कि क्या ये हवा है जो कह रही है। फाइनली अब उनका डर दूर चला गया था। तो देखा बच्चों आपने, ऐसा घोस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती जिससे वो बच्चे डर रहे थे। घोस्ट नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज। यू कैन रिवाइज इट।